बेसिकली हमारे यहाँ तो हम कहाँ पहुंचे थे? यस, आज हमें करना है ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन. सो वी आर डीलिंग विद दीज ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स. कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम्स की बात हमने की. फिर हमने कुछ ऑर्थोनॉर्मल सेट्स लिए, in particular in L2, big L2. Now we come to this important result, Gram Schmidt orthonormalization. Gram Schmidt orthonormalization. मैंने रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Just a minute. Yes. Okay. So we have got Gram Schmidt orthonormal. इसको क्या हो गया? So we have Gram Schmidt orthonormal. It says that as a theorem, it says that given any linearly independent sequence of vectors in a Hilbert space, inner product space, given any linearly independent let's call this xi in an inner product space H, there exists an orthonormal sequence EI such that span of xi I runs from 1 to n is equal to span of इनका linear span same जो वो जनरेट करते हैं वेक्टर स्पेस वो एक ही है for all n bigger than equal to 1. So basically, it also gives a method how to find that orthonormal sequence given an linearly independent sequence of vectors. So proof iska rather easy hai. We use induction. Firstly, okay, let's call this star. Firstly, suppose if x1, putting E1 equal to x1 by norm of x1, and you have to remember that if you have a linearly independent vectors, it will never contain zero. So हमारा जो linearly independent set है कोई, it cannot be कि उसमें कोई zero. This set cannot be linearly independent, right? Because then you can write zero as linear combination of others. So okay, why can't this be? Because zero हम लिख सकते हैं as a linear combination of other vectors in this set, whatever. So zero cannot. Why cannot these three be linearly independent? Right, because you can combine x1 and x2 and get the origin. Yes. Okay, so I can define, basically I can divide by this vector. Then norm of E1 is equal to 1, and hence E1 is an orthonormal set and
clearly span of E1, span of X1 is the same as span of E1. क्योंकि it is just a scalar multiple of x1, तो इसके जो all possible scalar multiples हैं, they would be all possible scalar multiples of x1, and that's the span of the two vectors. So therefore I can say, therefore star is true when n is equal to 1. So assume that the result, yeah, star holds for n is equal to k. That is, given x1 comma x2 up to xk, there exists an orthonormal set E1 E2, ऐसे में इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, मैंने अब सेट कह दिया, up to ek such that, ये already हमारा induction hypothesis होगा, such that span of xi, I runs from 1 to k, is the same as span of ei, e runs from 1 to k. So let's call it double star. So we have to show that, we show that it's also true for, we show that star holds for n equal to k plus 1 also. Okay, now we construct this ek plus 1. Basically मेरे पास e1 e2 ek तो है, तो मुझे ऐसा एक ढूंढना है ek plus 1 such that जो e1 e2 ek और ek plus 1 है वो भी एक ऑर्थोनॉर्मल सेट हो, और फर्दर जब मैं यहाँ xk plus 1 ऐड कर लूं और यहाँ ek plus 1, उनका स्पैन भी सेम रहे. So this is how we construct. Now define, मैं पिक करूंगा yk plus 1 को पहले मैं डिफाइन करूंगा xk plus 1, which is also because I have xk's मेरे पास given क्या है, I've got x1 x2, I've got a sequence, तो k तक तो मैंने यूज कर ली, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है मैंने उसको लिया और सब्ट्रैक्ट किया मैंने summation I runs from 1 to k xk plus 1 comma ei, because e1 e2 ek are known, so मैंने उन सब के लिए साथ इसका इनर रख लिया, फिर ये कॉम्बिनेशन ली और उसको सब्ट्रैक्ट किया from xk plus 1. Now then पहली बात, yk plus 1 is not equal to 0, because otherwise अगर ये 0 हुआ, because otherwise I will get xk plus 1 is equal to summation k runs, I runs from 1 to k xk plus 1 ei, which would imply that xk plus 1 belongs to span of ei up to k, because it's a combination of e1, e2, f2 up to k, but that by induction hypothesis is equal to span of xi, I runs from 1 to k by double star, which implies that x1, x2, xk plus 1 is not, is linearly dependent, which is not true. Is linearly dependent because you can write xk plus 1 as the linear combination of the others, belongs to the span of those vectors, that's what we mean. लेकिन ये जो हमारी sequence है, it is given to be linearly independent, a contradiction. यानी yk plus 1 0 नहीं हो सकता, ये non-zero vector है. Okay. Now what I do, I take ek plus 1 to be yk plus 1
divided by norm of yk plus 1. So it's non-zero, so I can divide by its norm. Now my claim is that this ak plus 1 is linearly independent to all even e2, e2 up to this, and furthermore that the spans are equal. पहले मैं दिखाता हूँ ये कि ek plus 1 ej is actually equal to 0 for all j runs from 1 to k. Now ये चलो लिखते हैं पहले, for all j lying between 1 to k, this is equal to, what would be this? This would be equal to ek plus 1 को substitute करते हैं, so it would be yk plus 1 divided by norm of yk plus 1 comma ek ej. Now that would be equal to, you take this out and substitute the value of yk plus 1, that's here. So it would be xk plus 1 minus summation I runs for 1 to k xk plus 1 comma ei comma ej. Next page में, that is ek plus 1 ej is equal to 1 by norm of yk plus 1, that's a scalar, into summation, so bracket में लेता हूँ, इसको अगर हम break करें into two inner products, then this would be this into this inner product of this vector and this vector minus inner product of this vector and this vector. Using the linearity of the inner product, I would get, okay, I would get this is equal to, what do I have? xk plus 1 comma ej minus summation I runs from 1 to k xk plus 1 comma ei ej. Right. So that would be equal to 1 by norm of yk plus 1 xek plus 1. Using the linearity again, I can take the sum out, so it would be summation I runs from 1 to k xk plus 1 inner product with ei into ei. Scalar bahar nikla, sum bahar nikla because of linearity. Now when I run I from 1 to k, I know that even e2 up to k they are orthonormal. So therefore they will be 0 except one I is equal to j. So अगर I j है तब ये 1 होगा, otherwise 0. यानी sum में एक ही term बचेगा. This would be जो हमें चाहिए. This will be just inner product xk plus 1 ej. यहाँ सिर्फ j वाली term बचेगी क्योंकि बाकी सारी 0, यानी वो होगी xk plus 1 comma ej. Of course, that's equal to 0, which implies that e1, e2 up to ek plus 1 is an orthonormal set. यानी जिस तरह से मैंने इसको construct किया तो ये orthonormal set हो गया. Furthermore, मुझे दिखाना है दोनों का span बराबर है, right? Now, अगर मैं देखूं how I have defined this yk plus 1. So basically, this thing, मतलब इसका scalar multiple है. Now, ek is the scalar multiple of this vectors, which is a linear combination of e1, e2, ek and xk plus 1. So वो हम लिखेंगे. Okay. Now clearly, ek plus 1 also ek plus 1 belongs to the span of the vectors. एक तो है ei runs from 1 to k union. I should write xk plus 1. But using my induction hypothesis, this would be nothing but a span of xi runs from 1 to k plus 1. Because ei's का span xi's k up to k का span है by star, right?
which implies that span of ek ei runs from 1 to k plus 1 is equal to span of xi runs from 1 to k plus 1. So hence star is true, जो पहली वाली equation है, for k plus 1 also, and hence by the principle of mathematical induction, star is true for all n belonging to the set of natural numbers. I can take this inner product space, say L23, that means R3 with the Euclidean norm, which is an inner product space. Of course, यहाँ पे जो inner product होगा वो usual dot product होगा. And I take the set, अगर मैं लूँ ये वाला set 1 1 1 1 1 0 1 0 0. तो पहले तो ये linearly independent है. I can check with the determinant test. So this would be 1 into 1 minus 1, so it's not equal to 0. So it's not equal to 0, therefore they are linearly independent. Can I get an orthonormal set? Can I apply this process to it? Right? मान लो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है. Then I have to find e1, e2 and e3 such that ये जो तीन vectors हैं e1, e2, e3, उनका span और x1, x2 and x3 का span same होगा. वो होगा ही क्योंकि ये basis है इसकी. तो इनसे और ये भी ऑर्थोनॉर्मल जब होंगे तो भी ये भी बेसिस ही होगी इसकी, यानी इन दोनों का स्पैन R3 होगा, उसमें तो कोई शक नहीं. एंड ऑफ कोर्स वी आर एश्योर्ड दैट बाय जो प्रोसेस है ग्राम-श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन. तो व्हाट, चलो हम अगर करेंगे लेट x1 बी इक्वल टू 1 1 1, x2 be equal to 1 1 0 and x3 be equal to 1 0 0 है ना. फिर मैं ये तीन लेता हूँ तो पहले मैं E1, तो मुझे इनको कंस्ट्रक्ट करना है. मेथड क्या है? मेथड सिंपल है. x1 को पहले लो, E1 को सिंपली ले लो x1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x1. और नॉर्म का मतलब यूजुअल यूक्लिडियन लेंथ है, सो इट वुड बी 1 बाय square root of 1 square plus 1 square plus 1 square into 1 1 1. So this would be just एक वेक्टर हमें मिल गया. ठीक है. अब दूसरे ढूंढना है. अब E2 को तुम लोगे, जो हमारा प्रोसेस है, तुम पकड़ोगे इस x2 को माइनस x2 E1. ठीक है. दिस इज आवर, नहीं इसको हम y2 मानेंगे थोड़ी देर के लिए. फिर E2 को हम लेंगे, जो हमारा मेथड है, y2 बाय लेंथ ऑफ y2. तो इस तरह से E2 कंस्ट्रक्ट होगा. अब E2 मैंने कंस्ट्रक्ट किया, फिर मैं y3 को लूंगा x3 माइनस x3 E1 माइनस x3 E2. तो फिर मैं E3 को लूंगा y3 by norm of y3. And that's our Graham-Schmidt orthonormalization process का तरीका. तो ये तो हो गया, E1 मिल गया. तो okay, then let y2 be equal to x2 minus x2. मैंने गलत तो नहीं लिखा? यस, मैंने गलत लिखा, क्योंकि यहाँ इसके साथ E1 होना चाहिए और यहाँ इसके साथ E1 और E2. क्योंकि वेक्टर्स है ना, दिस इज जस्ट अ नंबर. So this is the process. x2 से मैंने subtract किया x2 E1 E1. इसी तरह से x3 से मैंने subtract किया x3 E1 E1, x3 E2 E2, जिससे मुझे मिलेगा E3 not E2. ठीक है. तो ये हमारा ग्राम-श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है. तो E1 मुझे मिल गया. सो E1 क्या था? दैट वाज एक्चुअली 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3
सो y2 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मतलब कंसिडर किया एज दिस वेक्टर x2 e1, e1 मेरे पास है into e1. So x2 मेरा था 110, so this would be 110. इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है किसका, इन दोनों का वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा, x2 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट बन जाएगा 1/√3 2/√3. तो 1/√3, चलो मैंने 2 बार लिखा, into e1. e1 क्या है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, तो वो बन जाएगा 110 minus 2/√3, 2/√3. So what would be this? This is actually 2/√3 into 1/√3, comma 1/√3, comma 1/√3. So that is just 2 under there, so it should be 2/3, 2/3, 2/3. और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, so it should be 1/3, 1/3 minus 2/3, right? और मेरा E2 होगा y2 divided by norm of y2. So इसका नॉर्म होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 स्क्वायर, यानी जो मेरा y2 का जो नॉर्म होगा वो बराबर होगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो वो होगा रूट ऑफ 9 नीचे, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 4, सो वो होगा 6/9, वो होगा रूट 2/3. So what you do, so you take 1 by, so it would be root 3/√2 multiplied by y2, that's 1/3, 1/3 minus 2/3, तो वो होगा एक्चुअली 1/√6, 2/√6, आई थिंक यहाँ तो दिक्कत है रूट, हाँ बिल्कुल माइनस 2/√6. यहाँ हम चेक कर सकते हैं, वैसे इसका लेंथ 1 आनी चाहिए, इसकी लेंथ 1 आएगी, दिस स्क्वायर नीचे आएगा 6, ऊपर बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ये तो गलत हो रहा है, मैंने गलत तो नहीं किया, √3 कैंसिल, 2/√3. और अगर तुम्हें ऐसे लगा तो मतलब तुमने कहीं गलती की है, क्योंकि इसकी लेंथ हमें 1, इट शुड बी ए यूनिट वेक्टर, वरना हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है. तो किसमें जगह हमने कैलकुलेशन में गलती, √3 into √6, तो अगर स्क्वायर करेंगे नीचे बचेगा 6, ऊपर बचेगा 9, ये तो हो गई गड़बड़. कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी डेफिनेटली. तो जब मैंने यहाँ 2/√3 किया, सो बन जाएगा 2/3, 2/3, 2/3. ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया x2 को, सो दिस वुड बी x2 का इसके साथ क्या था, 2/√3. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो मुझे ठीक लग रहा है. I don't know गलती कहाँ पे है, so it is 1 plus, तो मैंने इसको उल्टा किया, √3/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इससे डिवाइड करना था, तो √3 into √2 is √6. ठीक, अच्छा, ओ सॉरी, देखो मैंने 1 की जगह 2 लिखा है. सो ऑफ कोर्स अब ठीक है, इट इज 1 + 1 + 4, तो ये ठीक है, मैंने यहाँ तक हमने ठीक किया था. अब हमें y मतलब E2 मिल गया, सो y3 टेक y3 इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम होगा, बिकॉज इट विल बी x3 e1 माइनस x3 e2 e2. तो अब मेरा बताओ x3 क्या है, x3 जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज 100, तो इट इज 100 माइनस x3 e1, x3 into e1 होगा 1/√3.
into E1. E1 क्या है? E1 है 1/√3 into 1/√3 into 1/√3 minus x3 inner product with E2. E2 कौन है? ये है. So it is 1/√6 into 1/√6 comma 1/√6 minus 2/√6. So that's easy. So it is basically 100 minus 1/3, 1/3, 1/3 minus 1/6, 1/6 minus 2/6. So we basically hoga 1 minus, this is 2/6, 2/6, this is 3/6. So I think ये 1/2 बचेगा, जो भी है. तो मैं मानता हूँ ये 1/2 बचेगा. ये बचेगा 0 minus 1/3, 1/6. So that's equal to 3/6. That is minus 1/2. इसका मुझे पता नहीं. So ये जाएगा plus 2/6 minus 2. 0 क्यों हो जाएगा? So you have नहीं 0 क्यों होगा? हाँ, because this is minus 1/3. तो माइनस माइनस प्लस हो किया जाएगा तीसरा वेक्टर. अब इसका नॉर्म क्या होगा? तो y3 बराबर है 1/4 plus 1/4 square root. That will be 1/√2. So मेरा जो E3 है मैं यहीं पे लिखूँ, अच्छे से करना. E3 is equal to √2 into 1/√2 minus 1/√2 0. So वो बन जाएगा, नहीं यहाँ 2 था, ये मेरा E3 अब मैं यहाँ लिखता हूँ. E3 जो फाइनली मुझे मिलेगा आई थिंक वो होगा 1/√2 minus 1/√2 0. Of course that's of vector 1. तो अब देखना है क्या ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है. Yes, E3 into E1 तो 0 हो जाएगा. This into this is also 0. This हाँ बिल्कुल सही है. So yes, we have found this orthonormal set. Given linearly independent set, but there is a way to construct. There are many ways to actually construct orthonormal set. Gram-Schmidt is a special one because it ensures जो पहले वाले linearly independent sets का span था वही span even E2 E3 का भी होगा. So this is Gram-Schmidt process. इसको तुम करोगे आगे. इसके बाद हम करेंगे एक result regarding these orthonormal sets, जिसमें हम यूज करेंगे अपना जो Gram-Schmidt orthonormalization है. So obviously if you take these, we know something about these spaces, say polynomial spaces over A. इसकी एक basis हमें मिलती है. So I've got 1x square. This is linearly independent in these polynomials, all polynomials on AB. Then if we have an inner product on a polynomial, on a set of polynomials, then I should be able to find this orthonormal series. Now the question is, it would depend upon कि तुमने क्या inner product लिया. पहले तुम्हें इसको एक inner product space बनाना है. So that can be done via the inner product, but उसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे. हालांकि मतलब ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दी, मतलब कहाँ एक तो हमने R3 की एग्जाम्पल है यानी, लेकिन Gram-Schmidt के लिए हमें पहले चाहिए एक linearly independent set. उससे हम एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक ऑर्थोनॉर्मल सेट. तो एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि let me write down, let H be a non-zero Hilbert space, यानी इसमें कम से कम एक non-zero वेक्टर है, which means infinitely many, क्योंकि फिर उनके स्केलर मल्टीपल्स भी वही होंगे, उनका सम भी, over some space, over some field K, then the following conditions are equivalent. Are equivalent. पहला, H has
accountable orthonormal basis। यानी इसका सबसे बड़ा जो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो सकता है वो काउंटेबल हो सकता है, जिसको हमने कहा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, और मैंने कहा था उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी कह सकते हैं, कहते हैं। 2. H is linearly isometric. Now we can define a linear isometry that preserves the distance and linearity to Kn, or for some n or small n2. Third, H is separable. Separable means it is a countable dense set, यानी ये तीनों conditions एक दूसरे को imply करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, show that H has a countable orthonormal basis if and only if it is separable, यानी तुम्हें कभी कभी डायरेक्ट ये equivalence of these two भी एक condition आ सकता है, लेकिन वो इसी से तुम कर सकते हो। So now this is also an important question to prove, लेकिन you should be able to, इससे तुम्हें मिलना चाहिए कि इससे ये और इससे ये हम कैसे निकालें, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना। पहला first implies second. Now हम क्या मान रहे हैं? It has a countable orthonormal basis. So let us take that. Let E1, E2, so on and so forth be the countable orthonormal basis of H for H. Then for X belonging to H, define T of X to be the vector, the sequence XE1, which is a number, XE2, now this is a sequence of numbers, right? Now, norm of Tx, जो होगा norm 2 of 2, norm T of 2x, या simply मुझे ऐसे लिखना चाहिए। Now, summation xei square is always less than equal to norm of x. Why? Because this is an orthonormal set. In fact, it's an orthonormal basis. It is equal to this. So this is less than infinity. Implies that Tx जो है वो belong करेगा, ये जो sequence है, it must belong to Kn or L2. Kn means अगर ये finitely many हुए, क्योंकि हमने कहा ये countable है, so it could also be finite. It must either belong to Kn or L2 depending upon whether this is finite or countably infinite. In case it is countably infinite, this series is still square summable, है ना? तो that means ये जो Tx है, right? ये जो vector है, so it is square summable. So, okay. So therefore, P defines a map from H to Kn for some n if x1, x2 is finite, and or small l2 if x1, x2 so on is countably infinite. तो map तो define हो गया. Now, also it is clear कि norm of tx जो भी हमने देखा is exactly equal to norm of x square. That's easy, है ना? By so this is basically norm of tx का square. अगर मैं Euclidean norm लेता हूँ, 2 norm, which implies that T is an isometry, it preserves the distance. For T is linear, that's also obvious. Now also T is linear. Why? Now if you take T of x plus y, वो क्या होगा? That would be x plus y comma e1
x plus y, comma e2, so on and so forth. But that is the same thing as x e1, pehla component, plus y e1, x e2 plus y e2, comma, so on and so forth. That would be equal to x e1, comma, x e2, comma, so on and so forth, plus y e1, comma, y e2, so on and so forth. This vector, but that is the tx plus ty. और इसी तरह से तुम लिख सकते हो कि t of alpha x is equal to alpha times t of x. So t is linear and isometry, and we are done. And it's automatically a bijection also because it's an isometry. Okay. Also, ये तो है ही. T is 1 to 1. T is 1 to 1 because T is an isometry, and on to because Rees-Fisher theorem. Rees-Fisher theorem. क्योंकि हर एक हिल्बर्ट स्पेस जिसकी काउंटेबल बेसिस होगी, so we can क्या बोलते हैं, find a vector जिसके coefficients वो हैं. Okay, ये हम कर चुके हैं ना कल शायद. Okay, तो पहला one implies second is obvious. Now second implies third. Second implies third क्या कहता है कि अगर linearly isometric है k into L1 वो तो obvious है. Now if H is linearly isometric to Kn or L2, and since both Kn and L2 are separable, it implies that H is separable. If you can find a basis क्योंकि सब कुछ preserve हो रहा है तो separability भी preserve होगी. Okay. Now ज़्यादा important है इसमें the last one. That 3 implies 1. यानी अगर ये separable है तो इसका एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा. ये इसका मेन है ना, ये 3 implies 1. So let x1, x2, so on and so forth be a countable dense, क्योंकि ये separable है तो इसका एक countable dense subset of H है, and we have to show that H has an orthonormal basis that is countable. ठीक है.